Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing SST Class 8. Children, this is your book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So, children, today we are going to start with chapter number 7 of Geography and the name of the chapter is Major Industries. So, let's start with the chapter. Here you have to unscramble the industrial vocabulary. Here few words are given. You have to rearrange these words correctly to form the meaningful words. And these are based on the industrial vocabulary. So this you have to do on your own. Manufacturing involves converting raw material into finished goods of a great value. So manufacturing का मतलब क्या है? Converting raw material को convert करना है finished goods बनाने में जिसकी काफी ज्यादा value होती है. The term manufacturing industry is used to identify any industry that makes products from raw materials by the use of manual labor or machinery. So ये जो term है manufacturing industry इसे कब यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को दैट मेक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स को बनाती है, बाय द यूज ऑफ मैनुअल लेबर और मशीनरी. मैनुअल लेबर की मदद से या फिर मशीनरी की मदद से अगर कोई भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्ट्स बनाती है उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है. Now let us now look at some of the major industries involved in the production of the variety of goods required by man. So अभी हम क्या पढ़ेंगे? कुछ ऐसी major industries के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए. These industries can be broadly divided into two categories और इन industries को दो category में हम divide कर सकते हैं. So heavy industries include iron and steel, metallurgical, heavy machinery, heavy chemicals, transport, equipments and fertilizer industries. So दो parts में divide किया गया है industries को दो categories में divide किया गया है. उसमें से first category heavy industries की और second है light industries की. So heavy industries में ये सारी industries आती हैं जैसे कि iron, steel, heavy machinery, heavy chemicals, transport, equipment and fertilizer industry. Light industries include textile, sugar, food processing, electrical and electronic goods and various consumer good industries. So यहाँ पे light industries में ये सारी चीजें आती हैं. Factors influencing location of manufacturing industries. So कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का. क्या लोकेशन होना चाहिए? ये कुछ फैक्टर्स हैं वी आर गोइंग टू लर्न. द फर्स्ट इज द कैपिटल, मींस आपके पास इन्वेस्टमेंट काफी होना चाहिए, मनी काफी होना चाहिए. कैपिटल रिफर्स टू मनी नीडेड एज इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी और सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की काफी जरूरत होती है. Large amount of capital is required for setting up an entire manufacturing unit. Manufacturing unit को set करने के लिए काफी ज़्यादा capital की जरूरत पड़ती है. Capital is required for setting up of buildings. Capital की जरूरत होती है buildings को set करने के लिए. Offices, plants or machinery, tools, furniture, electrical and IT infrastructure, purchasing raw material, etc. So इन सब चीजों के लिए हमें huge amount of capital की जरूरत होती है. Now the next factor is raw material. Raw materials are the most essential requirement in the manufacturing industry. So जो भी manufacturing industries में raw material एक बहुत ही important factor है. Raw materials may be agro based such as cotton, oil seed, fruits and mineral based such as iron ore or copper and manganese. So रॉ मटेरियल्स इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह सेट करना चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन वेयर
आयरन ओर इज इजीली अवेलेबल। अब इंडिया में जितने भी आयरन एंड स्टील की जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो छोटा नागपुर के आसपास हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा easily अवेलेबल हो जाता है। Here you can see iron ore used as raw material in the iron and steel industry. So this is iron ore that is used for making iron and steel. Now, the next factor is power resources. Manufacturers need continuous and affordable power supply. So manufacturers जो होते हैं उन्हें जो है continuous और अफोर्डेबल पावर सप्लाई की जरूरत होती है। मींस इलेक्ट्रिसिटी इनके पास सफिशिएंट होना चाहिए। कोल, मिनरल ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पावर रिसोर्सेज। सो इन्हें जो है हम पावर रिसोर्सेज के रूप में काफी ज्यादा यूज करते हैं। लोकेशंस दैट हैव कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर आर वेल सूटेड। सो वो लोकेशंस जिनके पास होता है कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी या फिर रेगुलर सप्लाई पावर का, वो काफी ज्यादा वेल सूटेड होते हैं इन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। द रूहर कोल फील्ड इन जर्मनी is determining factor for the localized of iron and steel industry in the Ruhr basin in Germany. So जो रूहर कोल फील्ड है जर्मनी में, वो जो है उसके पास काफी सारे ऐसे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं क्योंकि इट has the localization of iron. वहाँ पे जो आयरन है वो localized है। iron and steel industry in Ruhr basin in Germany. The top 10 manufacturing countries are China and the USA, Japan, Germany, South Korea, India, France, Italy, UK and Taiwan. So ये कुछ 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर। सम इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर लेबर इंटेंसिव। सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे लेबर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है। Therefore, labor is an important factor in determining the location of an industry. लेबर जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसी इंडस्ट्रीज को अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो आपके पास जो है लेबर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर हम हर एक लेवल की बात करें तो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, हर तरीके की लेबर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। स्किल्ड लेबर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, here you can see the picture. Now, transport facilities. An efficient transport network helps raw materials to reach factories and finished goods to reach market. So, जो efficient transport होता है, network होता है, वो help करता है raw materials को factories तक पहुंचने में और finished goods को markets तक पहुंचने में। So, transportation facility भी एक बहुत बड़ा ये factor है जो help करता है proper establishment of industry. Thus, regions that are well connected by transport routes are ideal site for industry. So ऐसी जगह जहाँ पे transportation facilities बहुत easily available हैं, ऐसी जगहों पे ये जगह बहुत ज़्यादा suitable है for industrial growth. Coastal locations with shipping facilities is particularly suitable for industries using imported raw material or producing goods for export. So, जो भी कोस्टल लोकेशन होते हैं जहाँ पे शिपिंग फैसिलिटीज भी है, ऐसी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है इंडस्ट्रीज के लिए यूजिंग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, या प्रोड्यूसिंग गुड फॉर एक्सपोर्ट, जो ऐसे गुड्स को प्रोडक्ट करते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। So children, here you can see a few common means of transport: air, and then road, then rail and water. All these means of transport are very important for effective production or effective industrial growth. Now, easy access to market. अब ये भी एक बहुत ही important factor है। मार्केट तक हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, पर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाए, वहाँ जाके बिके, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। So easy access होना चाहिए मार्केट का। Once the goods are ready for sale, it is necessary to have
easy access to a ready market. सो जब हमारा गुड बन चुका है, सेल के लिए रेडी है, तो हम इजीली उसे मार्केट तक पहुंचा पाए, बहुत जरूरी है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. सो जो प्रॉक्सिमिटी है टू द मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये प्रॉक्सिमिटी मीन्स मार्केट तक पहुंच जाना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि जो लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो मार्केट के पास है या नहीं. मार्केट प्लेस विथ रेडी डिमांड फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज नेसेसरी फॉर बोथ द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर लो या फिर कंज्यूमर की बात कर लो, अगर वहाँ पे उन्हें कोई ऐसा मार्केट प्लेस मिल जाए जहाँ पे द प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इन डिमांड, सो ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा. काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक फैक्टर है जो हेल्प करेगा कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर दोनों. कॉटन टेक्सटाइल हैव गुड डिमांड इन हॉट पीरियड्स. अब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे क्या कॉटन के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. नाउ that is why it is profitable to set up cotton textile industry in the such regions as the demand of such goods will always be high. So ऐसी जगहों पे जहाँ पे कॉटन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ऐसी जगहों पे अगर आपने कोई कॉटन इंडस्ट्री जो स्टैब्लिश कर ली तो वो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड रहेगी हमेशा हाई रहेगी. Here you can see the picture of a cloth market. Now major manufacturing industries. So काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. The first is the iron and steel industry. Industries such as iron and steel are termed as basic industries, as other industries depend on them. So ये जो इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील की, ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज इन पे डिपेंड करती हैं. Iron and steel industry is a key to the industrialization and development of the nation. ये जो iron and steel industry है वो industrialization के लिए काफी बड़ा एक you can say it's the success key to industrialization and the development of the nation. Nation का development जो है इन industries के बनने के बाद ही ज़्यादा अच्छे से start हुआ. This industry is categorized as a heavy industry because the raw material and the most of the products are heavy and bulky nature. ये जो इंडस्ट्री है ये जो है इसे जो हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. ऑफ द प्रोडक्ट्स आर हैवी एंड बल्की, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्की होता है. Now, location of these industries is determined by the connectivity of the place of the important place to other important places. So जो लोकेशन होता है इन इंडस्ट्रीज का वो डिटरमाइन करता है, उसे डिटरमाइन किया जाता है कनेक्टिविटी, उस प्लेस की क्या कनेक्टिविटी है उससे. एंड ये यू कैन सी इनसाइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कैसे स्टील को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड. Now, manufacture of steel as a raw material is necessary for the production of various kinds of machinery and infrastructural material. So, steel जो है एक raw material की तरह use किया जाता है जिससे काफ़ी सारे चीज़ें बनाई जा सकती है, काफ़ी सारे machines और infrastructural material भी बनाया जा सकता है, which are necessary for setting up other industries, जो ज़रूरी हैं दूसरी industries को set करने के लिए. Currently, steel is one of the most common material in the world. अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्टील जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन मटेरियल है वर्ल्ड में, with more than 1.3 billion tons products produced annually. Annually जो इतना प्रोडक्शन होता है स्टील का, it is a major component of in building, infrastructure, tools, ships, automobiles, machines, appliances and weapons. So ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं with this steel. Countries leading in the production of iron and steel are among the most developed nations of the world, such as Russia, Ukraine, Germany with its famous Ruhr base in the USA with its famous steel centers in Pittsburgh and Detroit, Japan's famous
Pobioska region and Beijing, Tianjin, Qingdao, Nanjing, Shanghai, and Guangzhou regions of northeast China. So यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं आयरन स्टील के, उनके नेम दिए गए हैं और कहाँ कहाँ पे जो है उनके सेंटर्स हैं, दिस इज रिटन हियर. नेक्स्ट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडिया हैज वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. सो इंडिया जो है काफी ज्यादा आगे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगैन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th century. और जो ग्रोथ है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वो स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से, जब 18th century की बात हुई थी. विच इन्वॉल्व मास प्रोडक्शन ऑफ yarn एंड क्लोथ्स, जहाँ पे yarn और क्लोथ्स का मास प्रोडक्शन हुआ. अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स के अलावा. The fibers used in textile industry as raw materials may be natural, such as cotton, wool, silk, flax, and or synthetic, such as nylon and polyester. So जो भी फाइबर यहाँ पे यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं. वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एंड मेनी अदर आर रिटन हियर. So कुछ इसमें से जो नेचुरल फाइबर्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं. So these fibers are used in the textile industry for making clothes and other things. Cotton textile industry is one of the most important and widespread industries. So ये जो cotton textile industry है वो काफी ज़्यादा important और widespread industry है, and it involves cultivating and harvesting of cotton. So इसमें क्या involve करता है ये, इसमें जो है कल्टिवेटिंग और हार्वेस्टिंग कॉटन को कल्टिवेट और हार्वेस्ट किया जाता है. प्रिपेयरिंग फॉर द इनिशियल प्रोसेस, अब इन्हें आगे जाके इनिशियल प्रोसेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है. स्पिन किया जाता है, वीविंग एंड कंप्लीटिंग द फिनिश. सो वीविंग मीन्स इसकी बुनाई की जाती है और लास्ट में जाके कंप्लीट प्रोडक्ट मिलता है. कॉटन टेक्सटाइल एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द इंडिया. सो कॉटन टेक्सटाइल क्या करता है, काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री is also an important industry in USA. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी काफी important इंडस्ट्री है यूएसए में, रशिया, जापान एंड इंग्लैंड. सो ये भी प्लेसेस जहाँ पे ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही है. In India, this industry can be divided into several sectors such as cotton textile, silk textile, woolen textile, ready-made garments, handloom, textile, jute and cotton. So इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है इसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्हें डिवाइड कर दिया गया. इंडिया हैज हाईएस्ट लूम कैपेसिटी. इंडिया की जो लूम कैपेसिटी वो काफी ज्यादा है, विद 63% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट शेयर. इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेल डेवलप्ड इन यूएसए, यूके, फ्रांस, इंडिया, जापान एंड जर्मनी. सो इन सारी कंट्रीज में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है. सिल्क टेक्सटाइल्स आर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, चाइना, जापान एंड कोरिया. India and Bangladesh leads in the production of jute textile. So कौन सी countries किस तरीके के फैब्रिक या फिर टेक्सटाइल में included है, that is written here. So silk textile के लिए जो important countries है वो है इंडिया, चाइना, जापान एंड कोरिया. और ऐसे ही जूट प्रोडक्शन के लिए इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीड प्रोड्यूसर ऑफ जूट टेक्सटाइल. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका लीड इन वुडन टेक्सटाइल. सो ये जो प्लेसेस हैं ये वुलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैव बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इतनी कॉस्टली इंडस्ट्री हो चुकी है. The first digital computer were built in the 1940 and in the 1990s. Personal computer became popular. So जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो 1940s में बना, लेकिन जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था वो 1990 में जाके पॉपुलर हुआ. Today a large number of
electronic industry is involved in digital technology and employs a large number of electronic engineers and technicians. अगर आज की बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे लेके जाए. दे डिज़ाइन, develop, install, test, manufacture and repair electrical and electronic equipment such as medical monitoring devices, communication equipments, navigational equipments and computers. So ये जो भी engineers और technicians हैं वो develop करते हैं, design करते हैं, install करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं. और कौन से devices जैसे medical monitoring devices, communication equipment, navigational equipment और computers. So ये different electrical items को develop करते हैं. Here you can see the picture of electronic industry. Consumer in electronic intended for everyday use are generally used for entertainment, communication and office productivity. So जो consumer electronics होते हैं वो daily use के लिए होते हैं जिससे लोग इंटरटेन होते हैं, जिससे लोग कम्युनिकेट करते हैं या फिर ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. द ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाज द फर्स्ट मेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कहा जाता है पहला बहुत सबसे बड़ा मेजर कस्टमर प्रोडक्ट था जिसको यूज किया जाता था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए. Later products include MP3 players, personal computer, telephones, audio equipments, television, calculator, GPS, automotive electronic, digital, camera, and players and recorders using video such as DVDs and VCDs. So बाद में धीरे-धीरे जाके ये सारी चीजें develop हुई. Countries leading in the manufacture of electronic goods are USA, Japan, China, Hong Kong, Korea, and Taiwan. The major industrial belts of the world. So the major industrial belts of the world are found in the regions where there is availability of raw material and power resources. So जो भी major industrial belts है world के वो जो है वहाँ पे raw material काफ़ी ज़्यादा होता है, power resources काफ़ी ज़्यादा use किए. There are 4 main industrial belts in the world. So वर्ल्ड में 4 मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं. तो पहला है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन इंडिया. अभी हमने वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स उनके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं. द मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन इंडिया आर मुंबई पुणे रीजन, हुगली रेन, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, ट्रायंगुलर रेन, गुजरात जामनगर रेन, छोटा नागपुर रेन, विशाखापट्टनम नॉर्दर्न industrial rains and southern industrial rains. Now children, let's revise what we have learned. Factors influencing location of manufacturing industries are available of capital, raw material, power resources, labor, transport and easy access to market. Iron and steel industry is a basic industry and as other industries depend on it. The growth of the textile industry began during the Industrial Revolution in the 18th century. The broadcast receiver was the first major electronic consumer product used for radio broadcasting. Now let's answer this question. Here the first question is, what are the main features of manufacturing industry? So manufacturing industry के क्या-क्या features हैं? That you have to write here. Name the 4 main industrial belts of the world. So 4 आपको जो industrial belts हमने अभी पढ़े थे उनके name लिखने. Explain the importance of the iron and steel industry. So the iron and steel industry is very much is of large importance because all the other industries are dependent on this industry. Name the countries where textile industry is well developed. So कौन सी countries है जहाँ पे textile industry जो है काफी ज़्यादा developed है? So from this one is India. You have to write down the name of the other countries also. Give example of customer electronic
used in our daily life. So कौन सा है consumer electronic जो हम daily life में use करते हैं? You have to name it. Explain the important factors that determine the localization of industries. So कौन कौन से important factor है जो determine करते हैं industries के localization? The electronic industries has become a global industry. जो electronic industry है वो काफी ज़्यादा बड़ा global industry बन चुका है. Discuss it. And how does the transport determine the location of manufacturing? So transport कैसे determine करता है location किसी भी manufacturing unit? So children, the transport determines the location of the manufacturing unit because if there will be no proper transportation facilities, the manufactured goods or units may not be available in the market at the given time. So that's why transport plays an important role in location of the manufacturing unit. Now explain the growth of the textile industry. Textile industry कैसे grow कर रहा है, that you have to write. Differentiate between iron and steel and textile industry. दोनों में क्या difference है? This you have to write. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.